this is Steve for Analyst, and I'm just being a little quiet today because I'm supposed to be quiet today. So, like I said, let's talk slowly, and I'm back with the next talk slowly segment that we are doing right now. And like I said, in the second half, we're going to be discussing Pamaavat. And on a serious note, let me just begin by saying it's just so hard to say Pamaavat. Like, we are so used to saying Padmavati. And for those of you who don't know, it's an Indian movie that's been recently released and it had a lot of controversy, a lot of ire of so many people left, right, and center. And I should probably put this inside. Anyways, coming back to the point though. So I saw it kind of like in the first day, whatever. But yes, I really did not enjoy it because I mean, come to think of it, it's a Sanjay Leela Bhansali film. Like Sanjay Leela Bhansali is known for little tiny, minor details to everything, like each and every little bit, and I was just expecting so much out of it. But to me, it was practically a little bit like an extension of Bajirao Mastani. Like you would think that Bajirao Mastani has actually not ended, and this is just a sequel to that or something. Because it's like, oh my god, you can definitely make out that Ranveer Singh is a different character in Bajirao Mastani. With all due credit, it was one of his best performances ever. And with no bias, it's again like one of his best performances over here. He kind of functions very well with Bansali, and what he kind of brings to the table is, oh my god, how did he do that, right? You kind of think like, how on earth did he do that? Because the way Ranveer Singh pulls off Khilji, Alauddin Khilji's character, is really phenomenal and amazing. Like, you are really awed by the kind of phenomenal acting he does there, because he really, really makes you believe that he is not Ranveer Singh and that he's Alauddin Khilji. So that I really appreciated, and that was very evident from the trailers as well. Like, couldn't you tell? Of course you could. इतना ज़्यादा इजी था समझने के लिए कि उसने तो बहुत ही उम्दा performance दिया है. But having said that, the rest of the movie did not seem to be tied together at all. It was just a flat, monotone story, no plot twists or anything of that sort. And to this, people say, what did you really expect? Because the story is known, I know, but again, there are just so many versions to the same story, because of which there are so many problems or whatever. But yes, coming back to known stories, I would say that, like, we know Mahabharat story, we know Prithviraj Chauhan story, but when it first came on TV, we were like, oh my god, I want to watch it. बिकॉज आपको दिल से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि भले ही आपको स्टोरी पता हो, भले ही आपको सब कुछ पता हो, आपको देखने का मन करता है, आपको जानने का मन करता है, आपको समझने का मन करता है कि क्या है, किस तरीके से फिल्माया गया है, कि आपकी जो वो इच्छा है वो जागृत होती है और आप मतलब बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं कि क्या है, कैसे दिखाएंगे. कहानी तो पता है, बट दिखाएंगे कैसे. And especially when we talk about Sanjay Leela Bhansali, all his movies are grand and epic and so elaborate in terms of costumes and sets and whatnot that you really expect a lot to happen. But costumes, of course, and designing, of course, they were amazing, and that's a grand spectacle that's there for you. You're not losing your money if you just went for that, for 3D. तो आप 3D में जाते हो तो आपका पैसा वसूल है, अगर आप सिर्फ यही देखने गए हो तो. लेकिन अगर आप एक कहानी की उम्मीद कर रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इतना फ्लैट मोनोटोन है. और तो भी इफ यू जस्ट टेक अ स्टोरी फॉर अ स्टोरी, व्हाटएवर, कहानी को कहानी की तरह ही लेते हैं, राइट. तो बिगिनिंग से लेके आखिर तक आपको इस बात की उम्मीद है कि अलाउद्दीन खिलजी को सबसे बड़ा धक्का पहुंचेगा, उसकी ज़िंदगी की पहली हार होगी, उसको बहुत ही बेकार लगने वाला है कि ओह शिट, आई ब्लडी लॉस्ट दिस. लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने फतह हासिल नहीं की है ना. तो आप वो उसके चेहरे का जो रंग उतरने वाला जो मोमेंट है, वो देखने के लिए इतने बेकरार, इतने बेताब हो रखे हो कि आप जानना चाहते हो. वो जो चेहरे पे शिकंद आएगी, वो जो गुस्सा होगा कि पद्मावती उसके आंखों के सामने जल तो गई लेकिन उसे मिली नहीं, जौहर कर लिया उसने, एंड ही कुडंट गेट हर. दिस होल आयर was never seen, and even the fire was never seen. I mean, वो VFX इतना ख़राब था कि मतलब इतना ख़राब था कि एक तो आग भी इतना ज़्यादा फेक लग रहा था, बिल्कुल दीपिका पादुकोण के यूनिब्राउ की तरह. मतलब अगर आपने कभी ज़िंदगी में यूनिब्राउ देखा नहीं है तो आप ऑब्वियसली सोच सकते हो कि शायद. एंड इफ़ इट्स अ लो बजट मूवी, ऑफ कोर्स यू आर लाइक, आई मीन कम ऑन, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है. बट फॉर अ मूवी लाइक दिस वे यू आर स्पेंडिंग सो मच,
where literally the budget is so huge and you're spending elaborately on the costumes, on the jewelry, what not, like really grand. Basically ना, अगर आपको अपने wedding के लिए designer theme dresses देखने हैं, या फिर आपको ये plan करना है कि elaborate Indian ethnic wear में क्या पहनना चाहिए, you know, ideas and all the royal stuff and all that, उसके लिए मूवी बहुत अच्छी है. But my only problem is that this is not a fashion show. This is a movie. और मूवी में होते हैं सीन, होता है स्क्रीन प्ले, होता है मतलब ऑब्वियसली द सिनेमाटोग्राफी वाज अमेजिंग, बट what I brought home with me, unfortunately for me, my personal experience, what I brought home with me from a movie, from this movie Pamaavat, was दीपिका के सिल्क दुपट्टे, उनमें लगी जरी, वो मखमली एहसास, वो छू के चले जाना. You could feel that. Literally, the fabric was so soft. It was just so cozy and inviting that you could feel how soft something she was wearing. And I have to give amazingly deserved credit for the digitally clothed tummies. That was fabulous. And this is where I am conflicted, because if you can do such an amazing job in the post production when it comes to VFX, when it comes to whatever effects you applied, I don't know what technology managed to do this, but then you have got your that entire controversy that happened because of the exposed midriff, and then they covered all the midriff of all the women in the Ghumar song. So when you can do that, dude, when you can do that, why can't you show slightly believable unibrow? I don't know. Even Khilji's this mark, this cut that they showed here was so real. That was so real. So I don't know why they didn't work on Deepika for that matter. And the entire performance, like I read a review somewhere, which I don't know if that's affecting my point of view right now, but yes, I then went and noticed that he was correct on that note, that Shahid Kapoor literally seemed like he was tucking his tummy all the time. So much so that he was so constricted in his movements, it kind of seemed more puppety than seemed more royal and real. I understand that you have to have a certain kind of a, you know, mannerism, the way you're walking, the way you're talking, because you are the king. But ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा इस मामले में. बहुत ही फेक लग रहा था वहाँ पे. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा था, मतलब एक्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो दीपिका बहुत अच्छा एक्टिंग करती है यार. आई मीन आई गिव ऑल ड्यू क्रेडिट टू, मतलब शाहिद कपूर का अगर आप उड़ता पंजाब देखो, उसके बाद उसने यहाँ पे जो किया है, मतलब दो बहुत ही भिन्न भिन्न शख्सियत, इतने अलग, इतने ज़्यादा अलग, लेकिन इतनी बखूबी से निभाया है. बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर आप उसको देखते हो तो. लेकिन दीपिका एक एक्सपेक्टेशन हो गया है पाडुकोन से, राइट? तो आपको लगता है कि सब कुछ सही करेगी, कम से कम बहुत ज़्यादा अच्छा ना करे, सही तो करेगी. या फिर कुछ मे बी ऐसा हो सकता है कि मुझे तो एक बार में समझ नहीं आई, मे बी, बिकॉज आई एम जस्ट जजिंग. ऑब्वियसली मैं दोबारा तो देख के नहीं आई हूँ. आई एम जजिंग ओनली फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई हैव सीन. एंड मुझे तुम्हारी सुलू वेरी फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी लगी थी, पीकू बहुत अच्छी लगी थी, बाजीराव मस्तानी भी अच्छी लगी थी. दीपिका की ही मूवीज़ की अगर हम बात करें तो सारी दीपिका की मूवीज़ में मुझे काफ़ी सारी बहुत अच्छी लगी हैं. धीरे धीरे उन्होंने एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखा है और बहुत अच्छा करती आई हैं, और यहाँ भी किया है. आई एम नॉट सेइंग शी हैजंट डन वेल, बट आई हैड अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद वन सीन. नो स्पॉयलर्स हियर, बट there was this one scene जब वो जाती हैं वो पंडित के सामने पहली बार, like she's just married and it is the first time she's going to meet that राजगुरु पंडित, and he's kind of taking her exam. ठीक है, तो जब एग्ज़ाम लिया जा रहा है तो तुम ही बताओ मुझे, उसकी आंखों में आंसू क्यों है? She is supposed to be a very confident and know it all woman, जो कि क्षत्राणी है, जो कि बहुत अच्छी वॉरियर है. शी कैन हैव अ तीर फ्लाइंग वेयर एवर शी वॉन्ट्स टू, एंड एकदम निशाने पे लगता है, निशाना उनका कभी चूकता नहीं है. ये प्रॉब्लम तो मुझे बाहुबली में भी थी कि जो इतनी अच्छी वॉरियर है वो इतने सालों तक क्यों पड़ी रही. मतलब लाइक सीरियसली यू वांट अस टू बिलीव दैट. हाँ, अगर आप बोलते कि उनको कुछ नहीं आता था और वो रह गई और वो आग में कूद गई या जो भी किया, तो आपको फिर भी समझ में भी आएगा विदाउट अ फाइट. बट ऑफ कोर्स दैट्स, और अगर हमको एंड ऑलरेडी पता है तो कम से कम वी वुड बी डाउटफुल. यस, कमिंग आंटी, कमिंग.